solve this problem from Irodov 1.175. The same problem has been asked in JEE Advance. इसी problem को JEE Advance 2026-25 पेपर सेकंड में पूछा गया, तो इसलिए we should do these problems from Irodov so that हमारा JEE का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आसान हो जाए, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। टू स्टार्ट विद, हमारे पास दो पार्टिकल्स दिए हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। Particle m1 is moving with some velocity, let us say it is moving with some velocity u, and particle 2 is stationary and collides with, और ये particle 1 particle 2 के साथ collide करता है। हमसे पूछा गया है कि जब ये particle after collision separate हो जाएंगे, what is the maximum angle through which the striking particle यानी कि particle 1 deviate होगा। Let us say यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो पार्टिकल 2 यहाँ से गया और पार्टिकल 1 यहाँ से गया, और ये इसका डिविएशन, इनिशियली ये ऐसे मूव कर रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमको पूछा गया है कि ये कितना मैक्सिमम डिविएट होगा फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी। अब क्वेश्चन चूंकि अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस ने भी पूछा है और इरोडोव में भी है, तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन, there are solutions available on YouTube। तो हमारा मुद्दा और मकसद ये नहीं है कि हम इसके जस्ट सॉल्यूशन को करें, हम इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 इज कन्वेंशनल वे। कन्वेंशनल वे से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे आप कोलिजन्स को स्टडी कर रहे हैं बाय सेंस, हमारा ये कोलिजन इज इलास्टिक, तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ के अगर हम करेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, we can find after collision we can find angle। ठीक है, एक चीज आप नोट कर दीजिए, इसमें बताया गया है कि m1 जो स्ट्राइकिंग पार्टिकल है उसका मास ग्रेटर देन है m2, और जेईई के प्रॉब्लम ने इसको एड्रेस किया बाय टेकिंग स्ट्राइकिंग पार्टिकल का मास 2m और जिसके साथ स्ट्राइक कर रहा है उसका मास लिया है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशंस, ये जरूरी है। इसी की वजह से अगर हम m1 जो स्ट्राइकिंग पार्टिकल इसका मास ज्यादा लेंगे m2 से, तो हमारी जो लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी स्कैटरिंग की, यानी डिविएशन की लिमिटिंग कंडीशन, दैट इज ऑफ डिविएशन इज अचीव्ड। तो ये जरूरी है। इसमें पहली चीज है कि ये डिविएट क्यों करेगा। अगर ये हेड ऑन कोलाइड होते हैं तो ये डिविएट नहीं करेगा, क्योंकि हेड ऑन का मतलब है कि लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, अगर हम लाइन करेंगे ज्वाइन बिटवीन द टू पार्टिकल्स,
particle 1 or particle 2, and if particle 1 is moving in the same direction as the line joining the two, they will collide head on. तो particles move करेंगे in the same direction, यानी कि particle 1 after collision इसी डायरेक्शन मूव करेगा जिसमें ये ऑलरेडी मूव कर रहा था. नो डाउट इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, बट इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन जो ये पहले कर रहा था. तो इसमें डिविएशन 0 होगी. तो उस टाइम हमारा जो एंगल ऑफ डिविएशन हेड ऑन में, एंगल ऑफ डिविएशन डेफिनेटली 0 होगा. अगर ये पार्टिकल, जैसे कि आप देखेंगे इसमें एडवांस की प्रॉब्लम में बोला कि ओब्लिक कोलिजन है. ओब्लिक कोलिजन का मतलब ये है कि ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक कर रहा है लाइक दिस, थोड़ा सा ये ऊपर है इसकी. दैट मीन्स कि जो लाइन जॉइनिंग दियर सेंटर्स जो है, सेंटर्स ऑफ टू पार्टिकल्स इज मेकिंग एन एंगल विद द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्ट स्ट्राइकिंग पार्टिकल. तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल इधर की ओर मूव हो जाएगा. पार्टिकल 2, दिस इज आवर पार्टिकल 1, एंड पार्टिकल 1 जो ऐसे मूव कर रहा था इनिशियली, ये डिविएट होगा इस डायरेक्शन. वो यहां से भी दिखता है बिकॉज इंपल्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स. तो इस बॉडी पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. इनिशियली ये रेस्ट पे था तो इधर की ओर मूव करेगा. अब इस बॉडी पे फोर्स लगेगा इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में. तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो रिड्यूस होगा. अगर वेलोसिटी पहले ऐसे थी तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो टेंजेंट होगा ऐसे, तो इस पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है बिकॉज देयर इज नो इम्पल्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. अलबत्ता इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट, इम्पल्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से ये वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा स्मॉल हो जाएगा. तो अगर आप इसको रेजिड्यूट करके देखेंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा. सो दैट इज व्हाई कि पार्टिकल 2 हमारा इन दिस केस, पार्टिकल 1 इन दिस केस इस डायरेक्शन में जाएगा और पार्टिकल 2 इन दिस डायरेक्शन में जाएगा. दैट इज व्हाई कि हमारे पास स्कैटरिंग के लिए अगर हमको इसको डिविएट करना है, स्कैटर करना है, तो ये ओब्लिकली इसको स्ट्राइक करना चाहिए, न कि हेड ऑन, so that we will have an angle theta in this deviation, in this तो इसमें deviation angle theta की हो. That means from any point, this point to this point जब स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इसने, अगर आप एयरडो का प्रॉब्लम देखेंगे उसमें वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है. एयरडो प्रॉब्लम में देयर इज नथिंग, वेलोसिटी के बारे में कितना वेलोसिटी है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी का इसमें कंसर्न नहीं है. इट इज जस्ट वेयर इट स्ट्राइक्स. जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, एट वन पॉइंट ऑफ द स्ट्राइक, तो ये एंगल हमारा मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये फिर रिड्यूस होगा. सो वी हैव टू फाइंड कि ये मैक्सिमम डिविएशन कब होगी, इसमें एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन कितना होगा, कब नहीं कितना होगा. एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन हमें फाइंड करना, ठीक है. एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन हमें फाइंड करना है. अब बोलेंगे ये यहां से भी स्ट्राइक कर सकता है इन दिस डायरेक्शन, बिल्कुल कर सकता है. उस टाइम क्या होगा कि हमारा पार्टिकल 2 इस डायरेक्शन में जाएगा और पार्टिकल 1 इस डायरेक्शन में जाएगा और दिस विल बी आवर एंगल ऑफ डिविएशन. सिर्फ ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सेम होगी. यानी कि दैट मीन्स कि अगर एक पार्टिकल आ रहा है, अगर दूसरा पार्टिकल ऑफ हायर मास इसको आ रहा है, ये इसको अगर ओब्लिकली स्ट्राइक करता है, पार्टिकल 1 विल डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. वो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी. तो इसके लिए टू सॉल्व, टू गेट, टू फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू, आपको YouTube पे ढेर सारे सोल्यूशन मिलेंगे जो नॉर्मल हमारा बेसिक मेथड से भी निकल सकता है. मे बी आई विल ट्राई दैट इन द फ्यूचर वीडियोस, ताकि जो बच्चे सेंटर ऑफ मास में कंफर्टेबल नहीं है उनको मैं वो दिखाऊं. जस्ट बाय कंजर्विंग मोमेंटम, जस्ट बाय कंजर्विंग मोमेंटम
and conserving kinetic energy हम इस एंगल को डिराइव करेंगे एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन को। दूसरा है बाई मोमेंटम को भी ऐसे हम कर सकते हैं, बाई मोमेंटम वेक्टर्स को ही हम लेंगे तो उससे भी हम कर सकते हैं। और थर्ड इज हम इस मोशन को, इस सारे फेनोमेनन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड angle of maximum deviation। ठीक है, तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो चलते हैं आगे। प्लान में हम ये है कि पहले दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, द पार्टिकल 1 इज हियर, द पार्टिकल 2 इज हियर, this is our particle 1, this is our particle 2, this is moving with a velocity, let us say u, in ground frame. So let particle 1 move with velocity u in ground frame. So what is the velocity of center of mass? क्योंकि हमें that will be m, velocity of particle in ground frame, plus इसका तो 0 है m2 का, m1 plus m2 which will be m1u divided by m1 plus m2. So velocity of center of mass is same as the velocity of the particle 1 because particle 2 हमारा stationary है। अगर ये particle 2 भी move कर रहा हो तो इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी जरूरी नहीं है कि u की तरह ही होती, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन दिस वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ, अब हम सेंटर ऑफ मास में जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अब हम सेंटर ऑफ मास में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल 1 इन COM बिफोर कोलिजन, उसको हम लिखेंगे U1 CM center of mass. That will be U and CM will be what is its velocity in the ground frame minus what is the velocity of center of mass in the ground frame, which will be simply M1 U1 will go M2 U, the velocity of this particle in, here it is ground. Similarly U2, velocity of another particle in center of mass frame will be 0 minus you see these velocities are opposite in center of mass frame। जब हम center of mass frame में देखते हैं center of mass will be at rest, तो ये हमें इस velocity से आते हुआ दिखेगा और ये हमें इस वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो चलते हैं आगे। तो हमारा मोशन सेंटर ऑफ मास में क्या दिखेगा जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दिस विल सी अस अप्रोचिंग U1 CM से एंड दिस विल सी अस अप्रोचिंग U2 CM से। ठीक है जी, दैट वाज आवर ओके राइट। नाउ one thing, जो one fundamental चीज होती है, which all of you know that where we will use that P net of all particles in COM, center of mass frame, is 0 if no external force acts। यही होता है शायद, ठीक है, ये चीज आप याद रखो। दिस इज ब्यूटीफुल थिंग जो हम यूज करेंगे। अब यहां भी आप देख सकते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सो P नेट बिफोर कोलिजन, एज आई बिफोर कोलिजन कितना होना चाहिए, ये आप समझो। बिफोर कोलिजन will be momentum of this particle, that is m1, what is its
velocity in the center of u1 c1, that is m2, okay, u divided by m1 plus m2. And what is its, इसका कितना होगा, because the velocity is minus, that is m2 m1u divided by m1 plus m2. Definitely these are vectors. Opposite direction this goes, so it is 0. But this thing holds throughout this collision or after collision, that P net is 0. Okay, now they are after collision. Let us say these are the collision के बाद एक particle हम center of mass में है. The particle 1 is moving in this direction and the particle 2 has to move in this direction. Why? Because center of mass to move कर रहा है, center of mass is at rest, but what we will see in that frame, center of mass का तो अब ground frame में उसी velocity से करेगा, लेकिन P net is 0. That means the magnitude of the velocity after collision, अगर हम देखेंगे after collision, अगर ये इसकी velocity थी in the center of mass frame, this was its let V1 cm be the velocity of particle 1. This is our particle 1, this is our particle 2 after collision. Okay. Now I told you that P net is 0. Although it will deviate from its path in the center of mass, it can deviate to any angle. In the center of mass, it was looking coming like this, and this was looking coming like this. Particle 1 was looking coming like this, and particle 2 was looking coming like this. And after collision, let us say the particle has deviated to an angle phi in the center of mass frame, and this angle should be also equal to phi because they were coming opposite. Now, what happened? This momentum should be equal to this momentum because in the center of mass P net is 0. That means the magnitude of this vector should be equal to magnitude of this vector and their directions should be opposed. ये हमारे पास two particle system है. This can be only happen then the VCM, the magnitude of the V1 CM will be same as what was it before. That was M2 U M1 plus M2. All right. If we see, and let V2cm be the, in fact we don't need it, velocity of particle 2 after collision in cm frame. ठीक. So if we not want to know that magnitude of V2cm, that will be simply M1U now these two vectors in the center of mass frame will be opposed. So let us concentrate on particle 1 because we have to find its maximum deviation. Now we know that this is the velocity of center of mass. This is the velocity of center of mass in ground frame. If we add it, the velocity of particle 1 u1 cm, we will get the velocity of the particle, because when we want to hit the particle, we will get that should be equal to the initial velocity u of the particle. Okay. Now we know that VCM is constant because it is moving ground frame, because VCM is no external forces acting. And if we want to achieve what is the velocity of the particle 1 after collision in ground frame, so we have to
add it a vector. So this is the velocity of the particle after collision in the ground. This was before collision, u1 cm. Now this is v1 cm. This is the velocity of particle 1 after collision in the. This is the velocity of the particle 1 after collision in the center of mass frame. This is its deviation. This is phi in the center of mass frame, because initial velocity was in this direction, because v1 cm was in this direction. So it has deviated like this. Magnitude is same. The magnitude of this vector is same as now what it has been deviating. Right. So if we want to see what is this velocity of the particle 1 in the ground frame, we have to concentrate on, we have to get the resultant vector of this and this, like this. This was VCM, and this was its initial velocity before collision, and this is the total u. Same vector addition. This plus this gave us u. Now this plus this vector will give us this vector, and this will be our theta. Okay, so this will be our v, where v is the velocity of the particle in the ground frame. Correct. Now you see, if you go back, VCM, okay, I will again write VCM is equal to, just I have calculated it somewhere, m1u divided by m1 plus m1u divided by m1 plus m2, and v1cm is m2u divided by m1 plus m2. Now m1 is greater than m2. Remaining terms are same. That means this vector is more than, the magnitude of this vector is more than this vector, right? Okay. Now we again go draw this diagram. This is our, sorry. This is our VCM, correct? This was its velocity. You can have this u1 cm, the velocity of this particle 1 before collision, and if we want to know it in the ground frame, this will be our u. Okay. After collision, this velocity vector has, its magnitude remains same. It has deviated from the original direction in the center of phase frame to an angle phi, and this is our v1 cm. Its magnitude will be equal to m2 u divided by m1 plus m2 in magnitude is equal to magnitude. But this magnitude remains constant. जितना भी इसमें deviation हो, जितना भी इसमें, it can deviate to any angle, but its magnitude will remain same, and this will also move in the, if it is more in the counterclockwise, this will move in the clockwise, so that p net is 0. This is the crux of the thing, right? So we can say that this, if we take it as a center, this VCM vector, its magnitude is same. So it is moving in a circle of radius v1 cm. Okay. And since this vector is more, as I told you, VCM is more than this. So if you draw a circle first like this, the circle is not a little bit good, but okay, we'll redraw again. We'll try to redraw it like this. So this is the direction of VCM. Now our V is this, and this is the angle of deviation. Now as VCM, that is this angle at different strikes, this will be different, this phi will be different, but its magnitude will remain same. When this is rotating, now this vector is rotating this on this circle with a radius of VCM, this, our V, which is the resultant, this is our V, which is the velocity after collision in the ground frame, will also rotate, and it will reach to its limiting value. It will reach to its, this angle will be maximum when this
tip of the V vector will be as a tangent to this VCM. So this is 90. After that, even if there is a collision, the VCM goes in this direction. See, this vector will start again decreasing. That means our theta will start decreasing. Understand this thing. Here you have to understand the things. Again I will repeat. We have a velocity vector VCM. We add it to the velocity vector of the particle 1 after collision, that is V1cm, and we get this vector V in the ground frame, and we get this because VCM is this because the direction of V was same as that of the VCM, which I told you earlier. The velocity of the particle, the direction of the velocity of VCM is same as the velocity of the particle 1. So this is the angle of deviation. This angle is deviation in the center of mass frame. This can be anything now, but its magnitude will remain same because your momentum P net has to remain 0. So we can say that if they deviate, it can deviate through any angle. For example, when it is deviated through this angle, our final deviation in the ground frame will be this. Okay, let us say that in VCM frame it has deviated through an angle this. Center of mass frame V1 after we had deviated through this. So what is the deviation in our ground frame? That will be now this angle. Okay, now we see that since this is constant, magnitude of this is constant, so it is moving, so we can say that it is a circle like this. So it can move in a circle like this. Also, VCM is greater than V1C1, as I told you before, M1 is greater than M2 in that relation, so that our deviation can be maximum when this V is tangent to this circle. That means our V1CM is this point. So this angle is 90 degrees. After that, you can say that okay, this can deviate after that, but this vector will come down. Our V vector, the velocity vector in ground frame, will change its direction. Now this is the limiting theta. So this will be limiting theta. At that time, this is 90 degrees. So this is our V1cm, and we know that, and we have to calculate V. So V is, if we can say that, what is the value of V? Right? This is perpendicular, this is hypotenuse. So we can say that we have to calculate this theta. So we can say that sine of this theta is V1cm, V1cm divided by VCM, right? So what is V1cm? V1cm is same, its magnitude M2U divided by M1 plus M2, and what is this? M1U divided by M1 plus M2. So your sine theta, its maximum value, at that time this will be 90, so it will be M2 by M. This is the relationship. So this is the maximum angle by which we can deviate. This can be deviated. Remember here, M2 should be greater than M, and that is why he has written in question rather M2 should be less than M1. Otherwise, it will have no meaning because this will be greater than 1. So M2 should be less than M1. When M2 is less than M1, that is M1 is greater than M2, so you can have, this is the relation. If you understand this question and remember the result, for if particle 1 is heavier than this, the maximum deviation can be sine theta, which can be M2, which is the lighter particle, divided by the heavier particle. And in our advanced question, this is given as M, and this is given as 2M. So this and this will go, and it will be 1 by 2. So sine theta is 1 by 2. Theta is sine inverse of 1 by 2, which is 30 degrees. So the answer to the advanced question is 30 degrees. If you have done this question, understood this, I tried to explain all the concepts clearly. Hope you will get the answer.